तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के पॉडकास्ट में इम्पैक्ट अनफिल्टर्ड में। तो ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं चेंज मेकर से, एंटरप्रेन्योर से, जो एक पर्पस लाते हैं फ्यूचर को शेप करने के साथ साथ चेंज करने में भी। तो इससे पहले हमने बात की है 3 बहुत ही बेहतरीन कन्वर्सेशंस हुई हैं हमारी मिस्टर श्रेयांश भंडारी, मिस्टर वरुण चावला और मिस सुजाता खंडाई से। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए। तो ये सिर्फ एक विजनरी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है जिन्होंने इको टसर सिल्क को फाउंड किया है, बल्कि इनका इम्पैक्ट जो है वो रूरल आर्टिशंस को एम्पावर करने में भी हेल्प, और उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर क्षितिज पांड्या। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। Thank you, Shivans, and namaskar to all our future viewers. So it's Khitis actually. Khitis nahi hai. Okay. What is? So Sorry, sir. it is Khitis. K-H-I Khitis. Khitish. It's a very unusual name. It's an unusual name because Khiti is Bhumi in Sanskrit. Okay. Khiti is like no Okay. owner of. तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर. Let's view of it. I'm completely okay. Okay. Yeah, please go ahead. Okay. तो सर शुरुआत आइस ब्रेकिंग वाली बात है. ठीक है। तो सर शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के साथ। ठीक है, हमने क्या कहते हैं इको टसर सिल्क के बारे में रिसर्च किया, उसने हमें बहुत सारा इंस्पायर किया। बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ कि वो क्या है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उसका जो आइडिया है और जो वो जो बीज आया और उसके बाद आपने उसको इस एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें कदम रखा और इस फील्ड में आप आगे बढ़े, तो उसके पीछे के थॉट प्रोसेस और जर्नी में क्या था? Okay. So I got into this business accidentally actually. ओके। So when I did my MBA way back in 1990, I was very clear that मेरे को अपना काम करना है. भले पान दुकान ही करे, चाय दुकान ही करे, लेकिन अपना काम करना है. You know, and so initially from the campus, I took a job and worked in a couple of companies for 2-3 years. And then started my own venture for manufacturing porta cabins and mobile toilet vans. People from Delhi know this mobile toilet vans are the toilet, toilets built on a van, on a chassis, which are placed in slums areas, etc., or tourist spots to provide basic, sanitation facility. I used to manufacture that. In 1998, I met with an accident. Oh. And this was a bootstrapped. उन दिनों ये बूटस्ट्रैप और स्टार्टअप वर्ड्स नहीं थे हम लोग. So it was my own small scale industry, one man show. And then when I met with an accident, I was out of action for almost 3 months. And during that time, there were a lot of losses and a lot of things went completely out of control. And by the time I recovered physically and tried to salvage the business, it was too late. So finally, I had to close down the business in the end of 1998. And I was, education का भी काम आता है. So I started doing some small consulting, took up consulting assignments. In one of, in early 2000, a senior from my MBA class school, she called me and said that she used to work for an NGO called Pradhan. It's a very reputed national level NGO. It has won many awards. And she said कि हमारा एक प्रोजेक्ट है टसर सिल्क के ऊपर, and we are struggling to build the business side. Can you come and help with the marketing BA? So I went there, had a look and all, and we had discussion with the founder of the organization and other people. And I told them, listen, I can tell you कि भी क्या बनाओ, कहाँ बेचोगे, किस प्राइस में बेचोगे, किस सेगमेंट को कवर करोगे. But at the end of the day, this is business. Somebody has to execute it. And आप लोगों ने NGO हो, आप लोगों का cadre is not equipped. Basically you are great at mobilizing poor people and doing all kinds of things in the villages, but business is not what you specialize in. So we got into a conversation and they said कि भी okay, काम करो आप, why don't you come on board and build the market side up? We are having this, we have trained these women in the village to make silk yarn so that she can make money out of that activity. And we want to make sure that there is enough demand for the yarn so that she will continue to make money.
So that is how I came in. जैसे कि भाई उसके आगे अगर जो कुछ business बनता है, like no, if you want to convert it into textile and sell it, at some point in time you can take it forward as your own business. So that there will be this cadre of women making yarn in the village, and you will be using that yarn to make fabric and so on. So that is how, and I never thought of being in fabric business ever. But in my wildest dream, I had not thought of one of the fabric business options as manufacturing fabric and selling. But I was at a loose end. I wanted to do something of my own, and consulting was. I'm not a consulting type. I'm more a doer than advisor. So I started with this. I took up this assignment, and I was completely clueless about textile marketing. But I said, okay, product hai, obviously there is a market, let me go around. And so we went around and gradually we built the whole thing up. To give you an idea about how, when I joined, in 2.5 years, they had a turnover of only 4.5 lakh rupees. In the first 10 months, we did 27 lakhs. And then, from that, we grew in strength from there. And so we had, by 2002, we were completely, without any subsidy. Okay. We were making enough money to cover all our costs and everything. And then at that point in time, we had 212 women in the villages making yarn. Okay. Initially when I joined, तो 30-32 लोगों का भी yarn use नहीं हो पा रहा था. But gradually then between 2002 and 2004, we increased it to almost 496. Oh my. Almost 2.5 times बढ़ाया. And by that time, the NGO was ready to, look at a more sustainable model. So we started looking to what will be the best model to take this project, make this project a sustainable, self-sustaining entity. So for the producers, we formed a producer company, which was a very new format under the Indian, Companies Act, where all the producers are owners of the company. And I started my own company, Ecotessar Sales Private Limited, and I bought the fabric division from the project. Okay. And in Ecotessar, it was a joint venture between the producer company and myself, because I didn't have enough money to buy the division outright. So we had a financial arrangement where part of the remuneration for the purchase price was given to them as shares. So I was focusing on converting yarn into fabric and selling, and the producer company was focusing on getting yarn made from the women in the villages. Their main mandate was to provide employment, and that is how things worked out. And since 2007, but although I have been selling fabric since 2000, but 2007 onwards, Ecotessar has been a separate entity. But the model is same. We use hand spun yarn, and the whole idea is that in our business, through our business, we want to create wage opportunity. So, Sivans, actually, poverty is more about lack of opportunity. देखो काम करने के लिए हर आदमी तैयार होता है गांव में, but either they are not educated, so they don't have skills, and there are no opportunities in the village. हमारे जो झारखंड के जो गांव है जहां पर हम ज्यादातर काम करते हैं, वहां पर they are completely dependent on agriculture. They have small land, छोटा patch of land है, और they are dependent on rain, natural rain. They don't have irrigation facility, तो उससे एक ही crop कर पाते हैं, and the output of one crop is just enough to survive for 4 to 5 months. Okay. Then they have to migrate to the nearest city and work as day wage laborer. क्योंकि गांव में ऐसा करीब है, कोई एक दूसरे को काम नहीं दे सकते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है. So now all of them have to बोरिया बिस्तरा लेके, बीवी बच्चों को लेके नियरेस्ट शहर में चले जाते हैं. और शहर में जाके क्या करेंगे? They are not like डॉक्टर इंजीनियर की भाई अकाउंटेंट की कहीं जाके कुछ काम कर ले, वैल्यू एडेड. So they end up working on construction sites. They end up रिक्शा पुलिंग. अच्छा, they have to live in very bad condition. अच्छा, अब बच्चा क्या है ना, 6 महीने गांव में है, 6 महीने शहर में, उसका एजुकेशन goes for a toss. Now the next generation poverty will get perpetuated. बच्चा भी पढ़ाई नहीं करेगा, 10-12 साल के बाद में वो whenever he is an adult,
15-16 साल 17 साल में when he joins the workforce, he will join as an illiterate person, which means the poverty that his parents faced, he's going to be in the same cycle. तो जो प्रधान का मोटो था ये था कि हाउ टू वी क्रिएट कैश इनकम in the hand of the family so that they don't have to migrate. And one of the activity that they zeroed in was this making of yam, because for this you don't need any education. It's like cycling. आप साइकिल चलाने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको खाली हाथ, आंख और पैर की जरूरत है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. तो ये याम भी छोटी सी मशीन है जिसपे आप ये कर सकते हैं. So today what we see is women don't go with a husband to the city because वो घर पे काम है. And she works पार्ट टाइम ही काम करती है, 3-4 घंटे ही काम करती है. बाल बच्चा, गाय भैंस बकरी, खेत का कुछ काम है, उनको सबको अटेंड करके दिस गेट्स 3-4 आवर्स, उसी पे वो महीने में 2,500-3,000 हज़ार रुपये कमा लेती है. और देर आर ऑल्सो वीमेन हु वर्क मोर इंटेंसिवली लाइक 6-7 hours, 10 hours, 6-8 hours, and they earn around in a year 50,000-55,000. But this is 8 months because 4 महीने तो लोग अपनी खेती में बिजी रहते हैं. So there are women who earn around 20,000-25,000. There are also women who earn almost double to more than double of that in the same period, but because they have more time and they are willing to do. कई बार होता है ना कि घर में अगर बहू है तो बहू is taking care of the household work, then the sas can devote more time to this activity. So today we have 461 women making yarn for us. Recently एक यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रोजेक्ट आया हुआ है प्रधान के पास, where they are providing another 700 machines to us. So we are training the women ourselves. We provide them the work, raw material ourselves, and buy back 100% of the yarn made. And these machines, because it's a costly machine, so we were not able to afford it ourselves to. But now under the skin, we are adding another 700 women. ग्रेट सर, ग्रेट. मतलब काफ़ी ही गोइंग फ्रॉम आइडिया टू 750 मशीन्स एंड अ लॉट ऑफ वर्क, राइट? ओके. सो सर, जैसे काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे जब आपने इसको, क्या होता है, एक थॉट आता है कि जब आप इसको, पहले तो देखो आप एनजीओ के साथ, मतलब आपके अंदर एक थॉट था कि मुझे जो करना है खुद का करना है. फिर आप एक एनजीओ के साथ इनिशिएट किया आपने, फिर आप अलग हट गए, क्योंकि अलग मतलब क्या, मतलब कि साथ ही में है बट एक आपकी भी अलग एंटिटी बन गई. हाँ. तो अब मेरा ये सवाल है कि जैसे जब आप इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब इंसान, जब एक टाइम होता है जब बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो हम लोग स्केलेबिलिटी और प्रॉफिट के पीछे भागने लगते हैं, राइट? और वैल्यू जो, मतलब जो आप कह लो, एक जो आपने अभी बात की थी कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग लाइवलीहुड, राइट? कि हम उनको हेल्प कर पाए, और अपना जो आपने बोला था कि जो एनजीओ है वो एक प्रॉफिटेबल व्यू भी देख रहा था कि ये कैसे बन सकता है. आपने उनको सजेस्ट किया कि आप बिजनेस इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बैलेंस कैसे अचीव हुआ? ओके, देखो, लाइक आई सेड, आई एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आया था. I was, consulting करते करते I was tired of consulting, and for me this was a route to create a business for myself. I did not see it as a social, some social mission. But after joining hands with the NGO, and once I learned about the background, जो मेरा गांव में कोई काम नहीं था, मेरा काम चालू होता था गांव से प्रोडक्ट बन के आने के बाद, ठीक है ना. बट मैंने शौक कि भी मेरे काम से कैसे करके ए सर्टन वेरी पुअर फैमिली को कैसे इम्पैक्ट होगा, एंड हाउ इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. इट रियली मोटिवेटेड मी. I started believing in that dream. And yes, there are challenges. Once a normal businessman, everybody is hungry for growth and hungry for profit. That is your benchmark, right? कि भाई कितने पैसे बनाए और कितना बड़ा, what is my turnover or whatever. In a social enterprises, you now have two benchmarks. One is, I was very clear that this is a normal business. हजारों लोग कपड़ा बना के बेच के अपना घर चला रहे हैं, तो it cannot be a subsidized kind of a business. It has to be a normal business which yields profit and is economically sustainable. ठीक है ना? That was, I was clear from the first year itself. We made sure that second year onwards we were completely profitable. भाई हम धागा ठीक है गांव में बना रहे हैं, लेकिन बाकी तो कपड़ा बेच के तो हम नॉर्मल मार्केट में बेच रहे हैं.
तो कपड़ा बनाना का भी प्रोसेस वही है, सब कुछ तो वाई शुडंट बी यू नो वाई शुड बी सब्सिडाइज्ड. सो वो डे वन से मेरा एंडीवर था कि इसको किसी भी तरीके से इट हैज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस में. ठीक है. दूसरे लोग का क्या है ना कि ये नॉर्मल ट्रेडर आज अगर सोच लो कि भाई ही इज वर्किंग विथ एक पर्टिकुलर टाइप का यान, टुमारो ही गेट्स एन ऑर्डर फॉर पॉलिस्टर, ही विल जस्ट बाय पॉलिस्टर एंड मेक इट, राइट. उसको ये मतलब नहीं है कि भाई पॉलिस्टर कहाँ से ले रहा हूँ. हमारे लिए क्या था कि भाई हमारा प्रोजेक्ट का यान ही हमारा यान था. सो लॉट ऑफ टाइम्स आई वुड से नो टू एन ऑर्डर बिकॉज वी वेर it would have meant I would be making things out of yarn which is not from my project. So I was very clear, though I was not a social, I was not an NGO person. I was very clear कि mandate मुझे जो मिला हुआ है, जो ओरिजिनल मेरे को मैंडेट है कि भाई कैसे इनका मार्केट क्रिएट करना है. तो अगर मैं दूसरे यहाँ से मार्केट तो खड़ा हो जाएगा, बिजनेस तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आवर टारगेट. सो इट इज लाइक दिस हियर. सपोजिंग you create a factory for your child. और वो अगर सोच लो कि वो लेट्स से ही इज मेकिंग व्हीट का आटा, तो तुम व्हीट का आटा का ही सामान बेचने की कोशिश करोगे ना, बेसन नहीं करोगे ना. सो इट्स लाइक दैट कि भाई आई हैड वेरी इंटरनलाइज कि माय मैंडेट इज टू क्रिएट अ बिजनेस फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ yarn, so that the more yarn we sell, the more people will get employment in the background. So initially till 2013 तक मेरा कोई रोल नहीं था गांव में. Unfortunately, what happened was 2013 में the producer company which was formed by Pradhan went bankrupt. Oh, okay. So then there were this we call them दीदी. गांव में जो महिलाएं हैं, दीदी लोगों के पास मशीन था, but there was no raw material उनको कोई देने वाला नहीं था, और फिर इसको पिकअप करने वाला कोई नहीं था, because the entity which was supposed to do that went bankrupt. So then I started directly, Ecotasar started directly engaging with those women. So initially we were not very sure why this debacle happened, क्यों इतना loss हुआ, क्यों उनको bankrupt हो गए. So we started out with some 30-35 women in 2 villages. And gradually as we saw, perfected the model, now we have a completely sustainable, perfectly well-oiled machinery working, and gradually we have increased it to 461. And now we are so confident that we are increasing by another 700. ओके सर, ये सवाल जो है ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सवाल होगा कि अगले 5 से 10 साल में आप इको टेस्ला सिल्क को कहाँ देखते हैं? आपका विजन क्या है? देखो, I don't see it as a turnover वाला ये कि आज हम we are a 32 crore company, I want to become a 100 crore वाली बात नहीं है. I see it as how many people will be in my supply chain. आज के दिन में हमारा 1900 and last year it was 1954 people were in our supply chain. Or we were buying raw material from tribals, a complete product of all levels of supply chain, right? We buy raw material tasar cocoons from tribals in our area. तो एक tribal normally 7,000-8,000 cocoon वो करता है. We buy from X number of people. Then we were getting yarn made from 461 women. We buy a lot of yarn from Assam, where it is almost the product of almost 600-700 women from there. Then we use a lot of weaving on handloom, which means we are providing work to handloom weavers. And these are all core people. कोई Tata Birla Reliance नहीं है. These are people who are using that very obsolete technology to earn a living. Okay. So and then we have our office staff, we have stitching tailors वगैरह सब मिला के हम लोगों, including myself, we are 1954 people who are deriving some income from this activity. Okay. So मेरा ये है कि भाई I have this thing called Project 10,000. I am 60. I'll be turning 60 in another 2 months' time. मेरा ये है कि another by 65 when I am I want to hang up my boots. I want to cross the 10,000 mark, and also I want to make Ecotasar an organization which lasts over me. ऐसा नहीं कि मैं रिटायर करूं तो धीरे धीरे बिजनेस बंद करके बेच दूं या जैसा. Now endeavor is कि we can we make a business which is it's like आज के दिन में L&T ऐसे चल रहा है ना. There is no one Malik. Reliance में there is one family owning it. Tata में there is a symbolic family. But you look at a company like L&T. It's completely driven by the board.
which is answerable to the shareholders. So I am trying to create a entity hopefully in the next 5 years, which when I hang up my boats, it will continue to run. अंडरस्टूड। आपकी जो लेगेसी है वो भी कंटिन्यू करेगा और साथ ही साथ जो आपका विजन है कि बाकी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना वो भी क्रिएट करेगा आपके जाने के बाद भी इस कंपनी से। आपका ये मिशन है। ओके, तो सर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपने मेरे को बस एक चीज़ जाननी कि जैसे काफ़ी सारे हम लोग, हमारे जो जनरेशन है वो भी एंटर करना चाहता है या फिर ऑलरेडी एंटर्ड है इन दिस पर्टिकुलर मार्केट ऑफ क्लोथिंग, आई वुड से। ओके, तो आप उनको क्या मैसेज कर देना चाहोगे जो इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं? क्या मतलब उनको बताना चाहोगे कि इसमें कंपटीशन कितना है, प्रॉफिट कितना है, या अगर सिर्फ एक स्टार्टअप बूम की वजह से एंटर कर रहे हो तो गलत है? आपका मैसेज क्या है उनके लिए? देखो, हर फील्ड में ना any product, any economic activity is, there are people making money, there are people losing money. Right. There are some industries which are difficult to, a lot of competition is there. Like, in case of garments, garment का हमारा textiles में, it is very easy to get into it because you need very low investment. कोई ऐसा, if you want to make a car, you'll have to invest tens of thousands of rupees in molds and dyes and what have you. But if you want to start a shirt line, all that you want to do is you go and buy 100, 200, 500 meter kapda, and you can get it stitched anywhere. It's a very low investment से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में लो एंट्री बैरियर्स होते हैं ना, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। It's easy to get in, but then it is also very difficult to scale up. Unless so if you look at, अगर आप भागलपुर चले जाओगे तो because it's a handloom industry and most of the thing is done on job work, you have thousands of people, 20 लाख 50 लाख टर्नओवर वाले आपको 1000-2000 आदमी मिल जाएंगे। You will not find a single 50-100 crore का पार्टी because it's so fragmented. Beyond a certain scale it becomes difficult to be cost competitive. So हम लोगों का तो यही है कि we have gone to the next level of value addition. We also do stitching of cushion covers etc. and we export. That is why. Otherwise at certain level पे आने के बाद में ना इस मॉडल पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। But anyway, our objective was also कि how much more employment can we create. And हम तो ऐसे भी देखते हैं कि अगर यान अपने नहीं यूज कर सकते तो can we sell the yarn? Even if we sell the yarn, at least some didi will make money by making it, right? No, of course. So I may not be able to convert it into fabric, but if I am able to just sell the yarn, some woman in the village has made 1,000 rupees converting it into 1 kg of yarn. 100%. सर एक ये है ऑडियंस से हम हमेशा पूछते हैं, मतलब ऑडियंस से भी हम पूछते हैं कि आप अपना जो भी सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड आपने जो भी काम किया हो आप वो बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ सर हम आपसे जानना चाहेंगे एक ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपने फॉलो किया, वो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प की, कोई ऐसी बात जो आपको किसी ने बताई हो या कोई आपने एक प्रिंसिपल पकड़ा हो और वो आपने लाइफ टाइम फॉलो किया हो जिसकी वजह से आप यहाँ हैं? So, I belong to a family of small business ये family से, but we had, my dad and mom were very, ethical and environment conscious है, and way back in 70s 60s जब किसी को environment का कुछ वो नहीं था, my dad used to plant trees. And he used to use envelopes का उसको फाड़ के इसके अंदर का साइड को यूज करते थे as rough paper. So he was a born environmentalist with kind of so we were very conscious of social people around us, like garibi, honesty. These were values which were given to us from home. So I have won this thing. Whatever I've done in life, I have tried to do it as a law-abiding person, adhere to the law as and of course. So
there are always sometimes you have problems. ऐसा लगता है कि वो देखो ऐसे कर रहा है, उसका तो हो जा रहा है, हमको भी ऐसे करना चाहिए. There is there are always temptation, but ठीक है. So because of that attitude, running a social enterprise also came easy to me. Okay. So I was not chasing profits or making how much money I'm making from day one. So I had this attitude कि जो करना है सही काम करना है, like let's not cut corners and all that legally and ये. And on top of that, when I was running this enterprise, तो ये हो गया कि ठीक है, ये order हमारा अगर धागा से नहीं बनना तो रहने दो, नहीं करना. I might earn X amount of money out of this, but it will not. It is not for the I will be not creating any impact. Right. The energy will get diverted in those kind of textiles, and as I will not be able to do justice to my people in the village. Right. So I think the perks of this job, Sivan says, and I'm sure I would like a lot of youngsters to know this, is the high that you get from helping people. And you see, when I started out in 2000, पहले जब मैं एक दो बार ऐसे ही, that was the exposure trip. So the kind of गरीबी I had seen among the women who are making ज्ञान for us. घर में ऊपर में छत टूटी हुई है, बच्चों में के बदन पे फटे हुए कपड़े हैं. And then when we started giving them work and regular work, and they started making money from this activity, in 5-7 years I started seeing their houses are much better, repaired and maintained. बच्चों का ये, there are families who have sent their kids to residential schools. उस एरिया में there are a lot of residential schools where 1100-1200 रुपया per month में these are missionary run schools, and so the children will have a better future, right? Of course. And I today also see women having a piece of jewelry on their पे कान का या नाक का, ये that is sign of prosperity. अगर I cannot show you how it was 20 years back and what it is today. But when you go there and you see the excitement, and when we wanted to add this 700 women, we just went around some 7, 8, 10 villages, and there was such a excellent response. We were delighted with people saying कि अब मुझे भी करना है. क्योंकि these were people who had heard कोई भाभी के गांव में हो रहा है कि भाई उसकी बहन कहीं शादी होके गई है, उसके गांव में वो कर रही है. सो बाय दैट सारे एरिया में, एंड एवरीबॉडी सेड, हम लोगों को उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी. Word of mouth से they were so excited about this. And when you see that excitement, you realize how empowering this particular opportunities for them. Having this cash income in their hands is so empowering in their and I will send you a link on videos made by Bloomberg had done a feature on us. Okay, great. Way back, at the Sal Pehle. They went to the village and met all kinds of people, and and you have to see it for yourself. How empowering it is for them. Yeah, sure, of course, sir. That's very. And for an entrepreneur like me, when I see the end result of my work, it is not zeros on my balance sheet or profit and loss, additional zero. It is that, the joy and that, impact that you're making and the respect you get. Right. Today, you are talking to me because why? Because you see a social entrepreneur, right? Right, sir. There are thousands of people of my kind of turnover in Chandni Chowk. But you don't go there and, talk to anybody, right? Right, sir. Because that's a different scenario. Yeah. So yes, it has got its perks, and you have to be true to the mission, and you get a lot of reward, lot of recognition, and Okay. So, सर अब हमारा एक छोटा सा राउंड है. आई होप आप माइंड नहीं करेंगे. तो एक छोटा सा राउंड है, बेसिकली रैपिड फायर है. हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जिसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी देने होंगे. ठीक है. तो पहला सवाल हमारा ऐसे जाता है, कोई भी ऐसा रिसोर्स या फिर बुक जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो अपनी जर्नी में. So, when I joined Pradhan, the founder of Pradhan and I used to get to the office by 7:30 in the morning. वो भी जल्दी आ जाते थे, मैं भी जल्दी आ जाता.
And the time I spent with him casually, जो चाय, you know, we used to have a small chai break and he would, हम बाहर balcony में खड़े होके, you know, he used to tell me about कैसे काम गांव में होता है. Today, I think, you know, for me, what I am today and you know how I derived pleasure in this work and how I understood the whole dimension of my work and its impact is primarily because of Deep Joshi, who is founder of Pradhan, and he is my, you know, I'm hugely inspired by him. ओके ग्रेट. तो सर आपका फेवरेट टेक्सटाइल प्रोडक्ट कौन सा है आपकी कंपनी का? So it's like asking a mother कि तुम्हारा कौन सा बच्चा तुम्हारा पे ही है. Every as long as it's made with our own yarn, अपने you know प्रोजेक्ट है yarn से, all of them are equally you know dear to me. ओके सर, एक मिथ जो आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में तोड़ना चाहते हो? देखो मेरे लिए ना सस्टेनेबिलिटी, इफ यू आस्क मी, इज दिस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. Okay. When you we as a company we use natural fibers because you know as a concerned citizen I would like to use natural fibers instead of polyester or something like that. But मेरा main focus is कि how to make this activity sustainable. It should be profitable. So बाकी मेरे को और myth इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है. People have different views about sustainability. Of course. तो सर अगर आज आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होता? मैं एंटरप्रेन्योर ही होता. शिवम, मैंने तुमको बोला ना, मैं जब MBA भी करने गया ना तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे अपना ही काम करना है, भले ही चाय दुकान क्यों ना करूं मैं. अच्छा, हम दुकान या चाय दुकान लगे. तो सर उस टाइम पे आपका मतलब जैसे हम लोग तो काफ़ी सारे जब भी हम घुसते हैं बिजनेस फील्ड में, हमारा ना एक रोल मॉडल होता है, हम दिमाग में फिक्स होता है, जैसे रतन टाटा हो गए, सर रतन टाटा हो गए और बिल गेट्स हो गए. तो उस टाइम पे आपके भी दिमाग में कोई थे जो मतलब जिनके बारे में आपने उस समय पढ़ा हो और आपने सोचो यार ऐसे बनना है? कोई ऐसा, you know, I have read, I am a voracious reader, particularly at that point in time I used to read like everything under the sun, inspired by different people like Ford story से I was inspired. रतन जब से जी टाटा मैंने GRD ये टाटा ग्रुप के बारे में. But one thing which obviously I don't think I'll be able to do it in my lifetime now. When from the campus I took a job in Steel Authority of India Limited. Because you know I just thought कि कुछ दिन थोड़ा काम करते हैं फिर अपना काम चालू करेंगे. At that time they had 250,000 employees. तो मुझे लगता था कि किसी दिन यार मैं भी ऐसी कंपनी खड़ी करूं जिसमें कम से कम 2.5 लाख आदमी काम करते हो. You know, I missed the bus, but I'm happy with what I've done so far. And right now my target is 10,000 in another 5 years time. And 10,000 not general people, 10,000 of the kind of people we are working. राइट. सो सर थैंक यू वेरी मच. मज़ा आ गया आपसे बात करके. व्हाट एन अमेजिंग कन्वर्सेशन वी हैड. आपकी जर्नी सुन के तो इंस्पिरेशन तो सर हर इंसान की जर्नी से आती है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपना पाथवे फाउंड किया विद प्रॉपर गाइडलाइन, एक लाइट के साथ, और फिर आपने सोसाइटी को अभी अपलिफ्ट किया, आपने इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की और आप वैसे भी अभी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के ऊपर जा रहे हैं. आई होप कि आपका वो 10,000 वाला मिशन जल्दी ही पूरा हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. तो आज के लिए आई थिंक वी आर डन विद द पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you very much, Shivansh. It's nice talking to you. थैंक यू वेरी मच सर. And all the best. सर बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लिंक्डइन पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आप एक्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा. Sure, sir. I'll do that. I'll do that. I'm not very frequent on LinkedIn, but whenever next I log in, I'll accept it. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू सर.